Okay, so happy Teachers' Day to everyone. Happy Teachers' Day. Happy Teachers' And Day. Happy Teachers' Happy Day. Teachers Day, sir. Happy Teachers' Day, sir. okay, so in the last session, हम लोगों ने इकोनॉमिक साइकिल्स के बारे में बात किया और हम लोग जितना उसको सिंपली समझा सकते थे वो हम लोगों ने कोशिश की। अगर हम इकोनॉमिक्स की बुक्स में पढ़ेंगे तो हो सकता है हम कुछ बिल्कुल ही अलग सम पढ़ें। हो सकता है हम इसके बारे में बहुत थेरीज पढ़ें, बहुत सारी हाइपोथेसिस पढ़ें, बहुत सारी मैथमेटिक्स भी पढ़ें। तो जो इस सब्जेक्ट को इन्वेस्टिंग के बियॉन्ड सीखना चाहते हैं उनसे मैं कहूंगा कि उनको ये जरूर करना चाहिए। बिकॉज इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम कंपटीशन, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सम इंटरव्यू, if you are preparing for anything other than investing, then it'll be good that you study the subject as it should be learned from the point of view of its theory. हम लोग जो यहाँ डिस्कस करते हैं वो बहुत सिंपल भाषा में डिस्कस करते हैं, उसके एसेंस को डिस्कस करते हैं और इस चीज को फोकस करके करते हैं कि हम लोग इसको यूज करना है फियरलेस बनने के लिए, इंडिपेंडेंट बनने के लिए, जिससे कि हम फियरलेस और इंडिपेंडेंट इन्वेस्टर बन सके। ये हम लोगों का एम होता है। अब इकोनॉमिक साइकिल्स के बाद हम लोगों ने कहा था कि हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्टर रोटेशन साइकिल्स। इकोनॉमिक साइकिल्स के बाद हम लोग डिस्कस करेंगे सेक्टर रोटेशन साइकिल्स। हालांकि गुंजन कहेगी कि हम लोग के पास बहुत अच्छे नोट्स थे इसके, जब हम लोगों ने एसआई ग्रुप में इस टॉपिक को किया था बहुत साल पहले। आई एग्री, बट somehow I am not able to find those notes now. So we will continue whatever some things which I have downloaded from here and there, and it will remain extempore till I find some more time to make some better notes for speaking. So let's start sector rotation cycle. Actually, before economic cycles, we could have discussed what the economics itself is. We should have discussed what the economics itself is. And then we should have gone to its cycles. Now, having missed that, some other day we will visit economics. And along with economics, we will also try to understand economics through its bit of mathematics. In most simple form, we can say economic indicators. So we postpone it for some other day and jump to sectors. So when we will discuss economy, we will learn something called value chains. We will learn something called value chains. As we keep saying, value is in the minds of buyer and seller. Means मजे की बात है, बायर भी इसको वैल्यूएबल समझता है और सेलर भी इसको वैल्यूएबल समझता है। कोई अपने कैश को वैल्यूएबल समझता है, कोई उस, हम लोग इक्विटी मार्केट में बात कर रहे हैं तो कोई उस शेयर को या स्टॉक को वैल्यूएबल समझता है। लेकिन मजे की बात है, एक ही टाइम पे एक ही जगह दोनों लोग समझते हैं मेरा कैश वैल्यूएबल है और दूसरा ये समझता है कि मेरा स्टॉक वैल्यूएबल है। एट द सेम टाइम दोनों
फोकस किस पे कर रहे होते हैं? दोनों फोकस कर रहे होते हैं अपने वैल्यू ऑफ कैश और वैल्यू ऑफ स्टॉक, और वैल्यू ऑफ स्टॉक और वैल्यू ऑफ कैश। फाइनली एक सेंटेंस में हम कहें तो प्राइस विल ऑलवेज कैच द वैल्यू, प्राइस विल ऑलवेज कैच अप द वैल्यू इन लॉन्ग टर्म। ये भी हम लोग कहते रहते हैं। हो सकता है शॉर्ट टर्म में वैल्यूएबल कंपनी है, वैल्यूएबल स्टॉक है, वैल्यूएबल शेयर है, लेकिन बहुत सस्ते में मिल रहा हो। या ये भी हो सकता है कोई कंपनी एकदम बेकार हो लेकिन उसका प्राइस आसमान को छू रहा हो। शॉर्ट टर्म में तो कुछ भी हो सकता है। वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं जब हम लोगों ने टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स के बारे में बात किया था। लेकिन जो इकोनॉमी है, अगर उसको हम जीडीपी की तरीके से देखें और हम ये देखें कि विच इज सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स प्रोड्यूस इन दिस कंट्री, कंपनीज के बारे में, तो कंपनीज, द बिजनेसेस, दे क्रिएट वैल्यू चेन्स, दे क्रिएट वैल्यू चेन्स। Why? Because there is no company or business which is independent. Every company or business requires some raw material and produces some finished good. And between the raw material, ingredients, and the finished good, the one which is sold, the one which gets cash, lots of things happen. And finally, a product emerges which we take it to the market, to the buyers, and if they find it valuable, worthy of their cash, they buy it. When they buy it, the company gets sales, and something after that happens that we will learn when we come to the companies. So, all these things create some chains, means some linkages. They are linkages. One thing gets linked to another, gets linked to another third thing. And finally, something come which is able to attract the value in terms of cash. So this in a nutshell is value chain. We will learn it more in detail when we come to economics. So keeping this value chain, the whole economy can be divided into some sectors. The whole economy can be divided into some sectors. Why? Because the value chain for each sector becomes almost unique. Sometimes they may overlap with each other. Lekin overall, or in nutshell, each sector has its own value chain. And therefore, it is important to understand each of these sectors because at one point of time, all sectors may not trigger. All sectors may not trigger for its growth. And because of that, the behavior of each sectors differ from type to type. So when we said that no, in economics there are 4 phases and there is a phase which is a peak phase, and where lots of money with lots of money with lots of people and things like that, we said now we are speaking contradictory. हम लोग कह रहे हैं कि भाई सारे सेक्टर तो एक साथ नहीं काम करते हैं, सारे सेक्टर तो जो है वो अलग अलग तरह से बिहेव कर सकते हैं एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम. Sector rotation cycle will help us to understand this contradiction. No, why? So sector rotation cycles will help us to understand this contradiction. So the next question will come, what are these sectors? The next question will come,
what are these sectors? What are these sectors we are talking about? What is the name of those sectors? So, if we will go to the screener, we will find screener. Screener is an app which we normally use it. The stockmates, they use it for analysis of companies. We'll find there's a long list of sectors. If we will go and read some theoretical book, theory textbook, we'll find it will have some another list of sectors. If we will go and read some Government of India report, we'll find some other list of sectors. If we'll go to BSc, NSE, we'll find, or SEBI, we'll find another list of sectors. And if we go to AMFI, AMFI is that Association of Mutual Funds Industry. So if we go to them, we'll find another list. So a question will suddenly emerge naturally कि भाई सही कौन सी है. तो हमारा ये कहना है कि सब सही है और कोई भी सही नहीं. क्यों? सबकी इंटेंशन अलग अलग है. सबकी इंटेंशन अलग अलग है. सब लोग इकोनॉमी को डिफरेंट तरीके से देखते हैं और भी अपनी तरह से अपने उसको डिवाइड कर लेते हैं. हम लोग तो एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं. हम लोग तो एज ए इन्वेस्टर देख रहे हैं और इसलिए हम वो देखना चाहेंगे जो कि प्रोफेशनल इन्वेस्टर्स जिस तरह से वो देखते हैं, या जहां हम इन्वेस्ट करते हैं, जिस हम प्लेटफॉर्म पे हम इन्वेस्ट करते हैं, या जिन टूल्स की हम सहायता लेते हैं, वो लोग कैसे देखते हैं. सेकंड, हम लोग कई बार कह चुके हैं कि दो तरह के इकोनॉमी है. इकोनॉमी को दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज, लिस्टेड और अनलिस्टेड. और हम लोग तो इन्वेस्ट करेंगे लिस्टेड में खाली, विच इज ए वेरी नॉट वेरी बट विच इज ए वन पार्ट ऑफ द होल स्फीयर ऑफ कंपनीज. और चूंकि हम उतने में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं, इसलिए हम लोग उन्हीं सेक्टर्स के बारे में बात करें जो कि हमसे रेलिवेंट है. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन विल कम. ठीक है, यहां तक एग्री कर लिया. तो व्हाट आर दीज सेक्टर्स which are relevant for us in the listed space. So next time I will also try to find that list what SEBI has given or what SEBI has published. It is there on their website. We can see it anytime. But today, just to introduce the topic, let us see how the mutual funds, how the fund managers, how the MFI has divided the sectors. We will understand the sectors in very brief. First, we will go through the list. तो उससे क्या होगा, कम से कम हमारा दिमाग इस डायरेक्शन में ओरिएंट हो जाएगा. हो सकता है हमारे दिमाग में कुछ क्वेश्चंस भी जनरेट होने शुरू हो जाए और हम लोग वो क्वेश्चंस को पूछ भी पाएंगे. So, and this is not in any order. ये लिस्ट जो है अभी किसी ऑर्डर में नहीं है, is random, is not even alphabetical. So let us not try to draw some conclusions when I am reading this list. So first is the financial services, right? Financial service means पैसा, finance, loan, debt, market, money, banks, financial institutions, etc. IT, information technology, softwares, data analysis, so many things. Everything related with that. Information technology, IT sector. FMCG, right? Fast moving consumer goods, right? The goods what we consume. The goods what we consume. Fast moving means generally what the public consumes. Telecommunications, telephone, mobile, data, internet, all those things. OGS,
oil and gas, right? Our petrol, diesel, gas, or other light products, lubricants, so many things. Construction, our real estate, etc. Infrastructure, highways, construction, auto and auto components, car, buses, scooter, all those things. Consumer services, there are so many services what we consume. Power, electricity, etc. Healthcare, hospital, etc. Construction material, cement, etc. Consumer durables, right? That things what we don't consume immediately, it goes on for some time, your fridge, TV, etc. Diversified, which is not there in this. It could be anything, miscellaneous. Textile, kapde, etc. Fashion, services, variety of services we use. Services itself is a very big sector these days. Everything we require a service, right? Everything we require a consultancy. Everything we require somebody to tell us. All services. Capital goods, right? The assets which we acquire, machines, etc. Media entertainment, TV, etc. WhatsApp. Chemicals, as the name suggests, you make anything, you require some chemicals. Metals and mining, आखिर में घूम फिर के everything which is produced, which you can see and touch, is made of something. Metals and mining, how to extract them and how to purify them, refine them, and make it usable for us. Metal and mining sector. Reality, right? This is the housing sector. Forest material. Now, this is an interesting sector. This wasn't there some time back, but now it's becoming a sector of its own. So here we can say is that it's not the sector list is fixed. It also evolves. अगर आप 10-20 साल पहले जाते तो ये चीजें तो इसमें होती ही नहीं, because our economy had not grown that time. So this list keeps evolving. So forest material is one this thing. Very raw, you can say wood, but there can be so many things. A forest produce, there are so many things are there. That utilities. So all this makes the list of sectors. Any other sector, if it comes in somebody else's mind, any other sector which comes in anybody else's mind, we can say okay. So for the time being, let us assume this is equal to GDP, which is not correct by the way. But for the time being, let us assume this is equal to GDP, because ये सारे मिलके इसी से हम लोग की इन्वेस्टिंग स्फीयर बनता है. And before we move further, let me introduce one more word called industry. Let me also introduce another word, industries. Right? So these sectors can be further divided into industries. Right? See, sector of services. Services are a different kind of industries. They don't create physical products. Right? So here, when we say industries, we are saying physical and non-physical products, right? Yeah. We say product and services. So these industries, sectors within themselves have several groups of industries. Several group of industry. Why it is important to know? It is important to know because if we think that the whole economy or whole GDP can be divided into certain sectors, we so simply in 13, 14, 15, 6 sectors, right? We will be incorrect. We will be incorrect.
इफ वी से दैट सारी हर एक सेक्टर की इंडिपेंडेंट वैल्यू चेन होती है, दैट मीन्स टोटल सम ऑफ वैल्यू चेन of all these sectors is equal to the total all the value chains of economy, that again will be incorrect. So we must keep this in mind that we are not studying here the whole economy, the whole GDP. We are discussing only limited part of it. We are discussing only limited part of it which is applicable to us, and we are studying in most simple form. So these industries is within a sector. Also there are group of value chains. Within a sector, also there are group of value chains. Because sector is a very big sphere of economic activities. और उसमें भी some uniqueness is there in some different value chains, and which becomes industries. Means similar type of products. A group of companies which create similar type of products. That will be called the group of industries. So therefore, after some time we'll go to the screener and see there, we will see two things there. We will see sectors as well as we will see industries. And we'll see lots of industries. This list is very long. Instead of writing here or copying here, I thought we will see it there itself directly so that we can use it. And within the industries, within the group of industries comes companies. What are we trying to say? We are trying to say that after some time, we will start saying this share is better than that share. This share is worth my cash. This share is not worth my cash. It may happen दोनों कंपनीज एक ही ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज में बिलोंग करती हो, और ऐसा भी हो सकता है ये दो कंपनी जो हम कह रहे हैं एक अच्छी है एक बुरी है, हो सकता है अलग अलग ग्रुप की इंडस्ट्रीज में बिलोंग करती हो सकता है अलग अलग सेक्टर्स को बिलोंग करती हो. उस केस में अगर हम कोई कॉमन यार्डस्टिक ले लेंगे ये डिसाइड करने के लिए कि ये शेयर अच्छा है वो शेयर अच्छा नहीं है, ये शेयर वैल्यूएबल है ये शेयर वैल्यूएबल नहीं है, ये सॉरी ये अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है, ये इस तरह की बातें हम लोग कुछ दिन में करना शुरू कर देंगे. तो उस दिन हम ये गलती ना करें, इसलिए ये जरूरी है, इसलिए ये जरूरी है कि हम इस चीज को समझे, इसलिए हम इस समझे कि दो सिमिलर कंपनीज को ही कंपेयर करना चाहिए. अगर हम डिसिमिलर कंपनीज को कंपेयर करने जा रहे हैं तो दोनों को देखने का नजरिया भी हमारा अलग होना चाहिए, दोनों को एनालाइज करने का तरीका भी हमारा अलग होना चाहिए. ये चीज हम लोग को बिल्कुल शुरू में ही समझ लेना चाहिए. और मजे की बात है, अच्छी बात यह है कि ये सेक्टर रोटेशन साइकिल भी हम लोग को यही बताने वाला है. सेक्टर रोटेशन साइकिल भी हम लोगों को यही बताने वाला है कि हर कंपनी एक ही टाइम में अलग अलग बिहेव कर सकती हैं या करती हैं, जबकि सारी कंपनीज आर पार्ट ऑफ द सेम इकोनॉमी एंड एट द सेम टाइम दे आर कंट्रीब्यूटिंग टू द सेम इकोनॉमी, लेकिन उनका बिहेवियर अलग अलग हो जाता है. Why? Because their value chains are different. Why? Because their value chains are different. And that is why when we compare two companies, we must keep this in mind that every group of industries or every sector is unique. Every sector or group of companies are unique. And that is why we should compare them, keeping this difference in our mind. अब मैं थोड़ा सा कुछ और दिखाना चाहता हूँ आपको. पता नहीं ये पढ़ में आ रहा है क्या?
or should I enlarge it? Yeah. Now it is, और करना है? no, it's visible. First is financial services, this second is information है technology. ना? इवन इफ आपको नंबर्स नहीं दिख रहे हैं साफ में, नंबर दिख रहे इट डज नॉट मैटर, नंबर है ना? दिख इट डज नॉट मैटर. I only want to support whatever I am saying by some numbers. By some numbers. पहले हम लोग के नोट्स में बहुत सारा इस तरह का रिलेटेड डाटा था, किस साल में कौन कब गया, नीचे गया. अगर वो मिल जाएगा, वो नोट्स मिल जाएंगे, तो हो सकता है अगले सेशन में हम लोग आपको वो भी दिखा पाएंगे, अगर ऐसा ही ग्रुप के नोट्स हम लोग को मिल जाएंगे तो यहाँ पे क्या है, आपको डिफरेंट टाइम में दिख रहा है. डिफरेंट टाइम में आप देखिए, डिफरेंट टाइम में ये जून 21 से लिस्ट स्टार्ट हुई है, जून 21 से लिस्ट तैयार हुई है, और ये जुलाई